સોમનાથ મંદિરની સંપૂર્ણતાને 29 વર્ષ થયા છે। સ્વતંત્રતા બાદ ભારતની અસ્મિતા સમાન સોમનાથ મંદિરના પુનઃનિર્માણના સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના સંકલ્પને 29 વર્ષ પૂર્ણ થતાં જ સોમનાથમાં ભક્તિભાવપૂર્વક રીતે ઉજવણી કરાઈ। 11 મે 1951ના રોજ માત્ર ગર્ભગૃહનું નિર્માણ થયું અને દેશના પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ રાજેન્દ્ર પ્રસાદ દ્વારા प्राण प्रतिष्ठा करवामां आवी। त्यारबाद मंदिर निर्माण करवानुं कार्य प्रारंभ करवामां आव्युं हतुं। त्यारे संकल्प सिद्ध दिवस निमित्ते मंदिरमां पूजारीओ द्वारा महादेवनी विशेष महापूजा करवामां आवी તેમજ સોમનાથ મંદિર પરિસરમાં બિરાજમાન સરદાર પટેલની પ્રતિમાને ટ્રસ્ટ પરિવાર અને સ્થાનિક તીર્થ પુરોહિતો દ્વારા મંત્રોચ્ચાર સાથે પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવી હતી। जय सोमनाथ। सोमनाथ मंदिर का संकल्प सिद्धि थी। आज 1 दिसंबर को 29 साल पूरा हुआ है। देश आज़ाद हुआ उस समय सोमनाथ मंदिर भग्न अवस्था में था और माननीय सरदार पटेल साहब यहाँ पर आए। उन्होंने संकल्प लिया कि ये मंदिर हम पुनः जीर्णोद्धार कराएंगे। उसके बाद में मंदिर का निर्माण 44 वर्षों तक बनता रहा। पहले गर्भगृह का निर्माण हुआ, उसके बाद में सभा मंडप और उसके बाद में नृत्य मंडप, जो 1 दिसंबर 1995 को पूर्ण हुआ और तत्कालीन माननीय राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा के द्वारा देश को समर्पण किया गया। आज उसके उपलक्ष्य में माननीय सरदार पटेल साहब को पुष्पांजलि अर्पण की गई। सोमनाथ मंदिर में महापूजा का आयोजन किया गया।